बायोलॉजिकल सक्सेशन, ये सेकेंड चैप्टर का ही पार्ट है, ये आपको समझ आ जाएगा। बायोलॉजिकल सक्सेशन क्या चीज है? दैट इज, हाँ जी, ग्रोइंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन बैरन और न्यूड, जो खाली पड़े हुए हैं, बैरन और न्यूड एरियाज, अल्टीमेटली फॉर्मिंग क्लाइमेक्स कम्युनिटी such as climax community such as forest is called as biological succession. Biological succession is of two types. कौन सी दो टाइप की है? प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन इन विच सक्सेशन या ग्रोथ occurs in that barren area where no plant or organism had ever grown, जहां कभी भी कोई वेजिटेशन प्रीवियस नहीं थी। ठीक है, कभी भी नहीं थी, वहां पे अगर सक्सेशन शुरू होती है तो दैट इज प्राइमरी सक्सेशन। इट इज ए स्लो प्रोसेस, it is a slow process and therefore it takes many decades. Decades means 50 साल, 100 साल, many decades to attain climax community. That is called as primary succession. उसके बाद है secondary succession. It occurs in the region where vegetation was destroyed due to natural calamity such as fires or floods etc. जहां पे किसी टाइम फॉरेस्ट था या ग्रासलैंड थी, जहां पे पहले प्लांट्स ग्रो कर रहे थे, बट ड्यू टू सम रीजन दैट वेजिटेशन वाज डिस्ट्रॉयड, वहां पे दोबारा से वेजिटेशन के ग्रो करने को हम क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन। इट occurs quickly. Climax stage, it occurs quickly due to presence of underground perinating structures. Perinating structures क्या होते हैं? Which are there to overcome unfavorable conditions. आग लग गई, पूरा फॉरेस्ट जल गया, बट कुछ प्लांट्स की अंडरग्राउंड रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स अभी भी बची हुई है। वह जैसे ही कंडीशन थोड़ी सी ठीक हुई तो उन्होंने ग्रो करना शुरू कर देना। सो क्लाइमेक्स community
is attained in few years. Climax community is attained in few years. So this is about primary and secondary succession. ठीक है जी. Left side please. मैम अब मत करना. कर लो लिख लो. Quickly. कर दे बेटा, रब कर दे. चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन. आवाज मत करो. बेस्ड ऑन सबस्ट्रेटम. हाँ जी बेटा. क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो होती है जिसके बाद कोई चेंज नहीं होता. दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी. टाइप्स ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेटम. कौन कौन सी है? फर्स्ट है जीरोसियर एंड सेकेंड है हाइड्रोसियर. Xerosear means when succession occurs in water deficient regions. That is xerosear. Hydrosear when succession occurs in shallow waters, shallow aquatic bodies such as shallow lake, shallow ponds, etc. Xerosear, it is further of various types. That is lithosear and zamosear. Lithosear and zamosear. Lithosear occurs on barren rocks. Succession on barren rocks. Zamosear succession on sandy regions. Zamosear means succession on sandy regions. जो सबसे पहले सक्सेशन में जो सबसे पहले कम्युनिटी आती है, जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पायनियर कम्युनिटी. Pioneer community. So what is pioneer community? The organisms which
first gets established on barren regions. The organisms which first gets established in the barren regions. हाँ जी अमन, हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, इसमें मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स भी बताऊंगी, ठीक है। उसको हम क्या देते हैं, पाइनियर कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, ऑन रॉक्स या लिथोसियर, पाइनियर कम्युनिटी आर, हम कहते हैं that is lichens, crustose lichens. They are crustose. अमन जरा अपना माइक ऑफ कर ले बेटा. Crustose lichens on in tropical regions, जहां पे बारिश बहुत होती है. पाइनियर कम्युनिटी आर मॉसेस. मॉसेस फॉर्म्स पाइनियर कम्युनिटी. In secondary succession, ferns forms pioneer community. Ferns form pioneer community. ठीक है जी. पाइनियर कम्युनिटी, नेक्स्ट पॉइंट लिखना. पाइनियर कम्युनिटी इज succeeded by various transitional stages or sears. Transitional sears. The ultimate, most stable, highly diversified, community is climax community. Is climax community which is not replaced by any other community. Which is not replaced by any other community. तो पहले हम आ जाते हैं बेटा लिथोसियर सक्सेशन. तो हमने दो टाइप की सक्सेशन स्टडी करनी है, लिथोसियर एंड हाइड्रोसियर. सो फर्स्ट आ जाइए लिथोसियर सक्सेशन.
Lithosphere succession means barren rocks exposed to high temperature and light intensities. Exposed to water deficiency, no soil. ठीक है, ये लिथोस्फीयर बैरन रॉक्स के फीचर्स है। उसके बाद हम आ जाते हैं सीरल स्टेजेस। सक्सेशन में क्या कुछ हो रहा है, दैट आर सीरियल स्टेजेस। तो सबसे पहले क्या आया, दैट इज क्रस्टोस लाइकन्स। क्रस्टोस लाइकन्स एग्जाम्पल है ग्रेफिस, GRAPHIS, सच एज ग्रेफिस। ये एग्जाम्पल्स याद करने जरूरी है। राइजोकार्पोन, और बेटा ये 5 नंबर पे क्वेश्चन जरूर आता है। ग्रेफिस, राइजोकार्पोन। क्रस्टोस लाइकन्स फॉर्म पाइनियर कम्युनिटी। डिफरेंट लाइकन्स आ गए, पाइनियर community. They are attached firmly with the rocks. They are attached firmly with the rocks. They respire and forms carbon dioxide. The carbon dioxide reacts with water to form carbonic acid. They expire, मतलब expire means expirate, expiration जो होती है। They expire carbon dioxide which reacts with water to form carbonic acid. कॉमा करके they also secrete various other acids that causes breaking of rocks, slowly and formation of soil. धीरे धीरे क्या बन रही है, formation of soil. फुल स्टॉप करके the acids slowly corrode, CORRODE। अमन पठानकोट लिख ले बेटा, लिख रहा है? अच्छा, corrode, CORRODE, corrode the rocks and release various minerals from the rocks, comma करके some of which are absorbed by the lichens for their growth. फुल स्टॉप करके corrosion
CORROSION. Corrosion produces small depressions. गड्ढे हो जाते हैं rocks पर. Corrosion produces small depressions in which various spores, SPORES, various spores and organic matter gets accumulated. फुल स्टॉप करके, हाँ जी. एंड ऑर्गेनिक मैटर गेट्स एक्यूमुलेटेड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो. फोलियोस लाइकन्स सेकेंड है. फोलियोस लाइकन्स. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इसमें लिख लो. फोलियोस लाइकन्स में फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हेल्प्स इन रिटेनिंग ऑफ मॉइस्चर. Retaining of moisture in the soil, which helps in moisture in the soil, which helps in growth of foliose lichens. ब्रैकेट में लिख लेना leaf like. Foliose means leaf like, fleshy. Foliose lichens such as Parmelia and Dermatocarpon. Such as Parmelia and Dermatocarpon. ठीक है. Foliose lichens causes shading effect of crustose lichens. फोलियोस लाइकन्स बेटा बड़े बड़े होते हैं, क्रस्टोस लाइकन्स छोटे होते हैं. उनके ऊपर फोलियोस लाइकन्स ग्रो कर जाते हैं तो क्रस्टोस लाइकन्स को लाइट नहीं मिलती, बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. फोलियोस लाइकन्स कॉजेस शेडिंग इफेक्ट टू द क्रस्टोस लाइकन्स ड्यू टू विच क्रस्टोस लाइकन्स डाई. ड्यू टू विच Crustose lichens die, thus increasing organic matter of the soil. Foliose lichens also secrete more acids, which causes more formation of soil. नेक्स्ट आ जाती है मॉस स्टेज. थर्ड आ जाती है. पहले था क्रस्टोस लाइकन्स, फिर है फोलियोस लाइकन. हाँ जी, मोर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. थर्ड आ जाती है मॉस स्टेज.
तो इसमें लिख लीजिए फोलियोस लाइकन्स makes conditions favorable for the growth of xerophytic mosses such as torula and gremia, full stop करके mosses form mat-like structure, comma mat mat-like structure, comma retain more moisture, comma forms more soil. ठीक है, फुल स्टॉप करके the mosses being larger in size than foliose lichens, thus causing shading effect, to the crustose lichens, to the foliose lichens, causing their death. Ma'am, shading effect. To the foliose lichens, causing their death. ठीक है, xerophytic mosses invites growth of moisture loving mosses such as Bryum, Funaria, Hypnum, etc. Bryum, Funaria, Hypnum, etc. नेक्स्ट आ जाता है बेटा डायग्राम। अभी रुक जाओ, समझाऊंगी तभी बनाना। एनुअल ग्रास स्टेज, the mat formed by mosses